तो हेलो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें ये चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट था जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हम लगाते थे, और उस इंडक्टर और कैपेसिटर से जो एनर्जी है वो एनर्जी एक कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर को और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस एंड करंट, एंड इन दिस वे देयर इज ऑसिलेशन ऑफ चार्ज एंड करंट, राइट। और वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो अलग अलग सर्किट में हमको वो काम में आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ये पावर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एसी सर्किट में। तो पावर होता क्या है एक्चुअली? पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना काम हम कितने समय में करने वाले हैं, इसकी क्षमता, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने एक कंप्लीट साइकिल में हमको कितना काम करके देगा, उसको ही हमको अभी फाइंड आउट करना है। डीसी में ये जो पावर था, हम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट करके निकालते थे। इलेक्ट्रिकल जो पावर था वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट करके हम निकालते थे। तो यहाँ पर हम ये जो वोल्टेज और करंट, यहाँ पर एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। इट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देयरफॉर वी कांट टेक द any values, any given values, because with respect to time EMF and current will be changes and have different phases as we study in the resistor, inductor and capacitor. So power is nothing but it is the capacity to doing work. कम से कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क करते हैं, that tendency of anything, that is called as power. So in AC circuit, the value of power can be calculated by doing multiplication, by doing product over instantaneous value of EMF and instantaneous value of current. But in DC we take the proper values, because there is no variation with respect to time. In DC constant current is there, constant voltage are there, and therefore DC में हम voltage multiply by current डायरेक्टली करके वो जो पावर होता है वो पावर हम निकालते थे। लेकिन ऐसे में ये जो EMF है, ये जो करंट है, both are changing with respect to time in different circuits. So first of all, we going to discuss about the power in AC circuit with resistor. So for the simple circuit diagram, we have a resistor having resistance R. We have applied AC source having EMF is equals to E naught sin omega t, and current I is flowing through the circuit. So applied EMF is equals to E naught sin omega t. At certain instant time, we know that the current induced I is equals to I naught sin omega t. This is the instantaneous value of current, and this is instantaneous value of EMF. So E and I in this equation, E and I both are in the phase, दोनों भी कैसे एक ही phase में। So power can be written as power P is equals to instantaneous value of EMF and instantaneous value of current. So instantaneous is what? At that instant, at particular instant. So E naught sin omega t and I naught sin omega t. Do the product of these two quantities. So P is equals to E naught I naught sin square omega t. So this equation shows that the power varies with respect to time.
So this equation shows that this power varies with respect to time because it is a function of time. So we have to do the average of this quantity. इसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा. तो एवरेज पावर कितना होगा एक कंप्लीट साइकिल, जब चार्ज पूरा एक कंप्लीट साइकिल करेगा, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए उस चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन साइकिल. ठीक है, तो एवरेज पावर वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन साइकिल. सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू work done. So work done in one cycle, to P into dt power multiplied by time divided by the total time divided by total time. तो जीरो से ये जो t जब जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है. तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये जो पावर है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वर्क डन है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो टू टी. 0 to t integration 0 to t p multiplied by dt. तो p average power is equals to integration p का वैल्यू instantaneous e naught I naught sin square omega t dt divided by t, capital T. So e naught and I naught are the peak values of EMF and peak value of current. So this quantity are constant. So taken out of the integration. So E0 is divided by t integration 0 to t sin square omega t dt. So this integration we have done earlier. So integration 0 to t sin square omega t dt is equals to t by 2, and therefore P average is equals to E naught I naught divided by t multiplied by this quantity replaced by t by 2 is equals to E naught I naught divided by 2, and this is equals to half of E naught I naught. And we know that अगर इसको हमने इस तरीके से लिखा तो E naught divided by root 2 dot E I naught divided by root 2, and E naught by root 2 and I naught by root 2 is nothing but RMS values of EMF and RMS value of current, and therefore ERMS multiplied by IRMS. So average power is equals to ERMS multiplied by IRMS, and this value of power in a resistor circuit, that value of power is called as the apparent value of power. This value of power is called as apparent power. So this is what apparent power. Apparent power. So got it? The power in AC circuit with resistor. So we have a simple circuit. The resistor, EMF, AC source, EMF at any instant. The instantaneous value of E is equals to E naught sin omega t, and at any time interval current will be instantaneous value of current will be I is equals to I naught sin omega t. So E and I both are in a phase, and therefore P is equals to E naught multiplied by I naught. So E naught sin omega t and I naught sin omega t. So P is equals to E naught I naught sin square omega t. For equation, this equation shows that phase power varies with respect to time, and therefore we do the average power over complete one cycle. So charge, can we do work done in one complete cycle? So work done by the charge in complete one cycle divided by total time interval. So therefore P average is equals to integration over 0 to t P dt divided by total time t. So 0 to t E naught I naught sin square omega t dt divided by total time. So E naught I naught divided by t, this value is constant. So integration over 0 to t sin square omega t dt. But integration 0 to t sin square omega t dt is nothing but t by 2. So substitute this value. So E naught I naught divided by t multiplied by t by 2 is equals to E naught I naught divided by 2. And this can be written as E naught by root 2 multiplied by I naught by root 2. And these values are nothing but ERMS and IRMS. And therefore the average power is equals to ERMS multiplied by IRMS. And this power in AC circuit with resistor is called as apparent power.